गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला सॉल्व करेंगे साथ में। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। इस स्टेटमेंट के साथ कि ही हु हैव अ वे टू लिव कैन बियर एनी हाउ। जिन्हें जीना आता है ना, वो किसी भी परिस्थिति को झेल सकते हैं। कैसे झेलेंगे वो भी वो जानते हैं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कार्बन डेटिंग के बारे में। ये आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का डेटिंग नहीं है, ये कार्बन डेटिंग की बात हो रही है। कार्बन डेटिंग, कंसिडर द फॉलोइंग। Carbon dating method is based on the fact that the carbon-14 is a radioactive and decays at well-known rate. कार्बन डेटिंग तो बचपन से हम लोग जानते हैं, कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है, C14, क्योंकि इसका एक निश्चित अपघटन दर होता है, क्षय दर होता है। यस, कार्बन डेटिंग कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स। किसी चट्टान की उम्र निकालनी है तो क्या ऐसा निकाला जा सकता है कार्बन डेटिंग की मदद से? करेक्ट। जी हाँ, आपने सही समझा, एक ही सही है इसमें। क्यों? क्योंकि कार्बन डेटिंग जो है इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द कार्बन 14 C14 इज आइसोटोप ऑफ कार्बन, जिसका एटॉमिक मास 14 है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और ये एक निश्चित दर से अपघटित होता है, डीके एट अ वेल नोन रेट। द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप द कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज C12। हालांकि याद रखिएगा, वातावरण में कार्बन का जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला आइसोटोप है वो C12 है। द रेट ऑफ द C12 to the rate of the C14 in the atmosphere is almost statics is none। मतलब जब आप रेट ऑफ C12 बटा रेट ऑफ C14 निकालिएगा तो एक निश्चित दर ही मिलेगा। इसके सहायता से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कार्बन डेटिंग कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। किसी भी अजीवित पदार्थ के लिए कार्बन डेटिंग इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे वो पत्थर हो चाहे कोई इमारत हो। द एज ऑफ द थिंग्स दैट आर मोर देन, और एक दूसरी बात, जिसका उम्र 40,000 से 50,000 पुराना है उस कैन नॉट बी अराइव थ्रू द कार्बन डेटिंग, और उसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी वस्तु जो लिविंग है लेकिन अगर उसकी उम्र 40,000 से 50,000 अगर ज़्यादा है पुराना, तो भी आप कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन की जो डिकेइंग दर है ना, वो हाफ लाइफ टाइम शायद इससे कम है, इसलिए। तो कोर्ट in Varanasi rejected the plea asking for scientific investigation into the structure found inside the ज्ञानवापी मॉस्क। तो वाराणसी की कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया कि बोला हम लोग कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कराने वाले हैं इस मॉस्क्यूज का, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में कार्बन 14 चर्चा में है, उसका मतलब इस्तेमाल होता है ना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पैरोल, पैरोल के संबंध में यूपीएससी पूछी है। पैरोल इज ए सिस्टम ऑफ रिलीजिंग ऑफ अ प्रिजनर विथ ए सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। मतलब पैरोल जो है वो एक तरह से जो कैदी है उसको रिलीज करने का एक तरीका है। कब? विद द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब सस्पेंशन हो जाएगा सेंटेंस का, दिया गया तिथि। ऑर्डर्स रिगार्डिंग द पैरोल और फरलो कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या पैरोल और फरलो के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है किसी कोर्ट में? The procedure regarding the parole is covered by the section of IPC. Is it right? Which are the correct? I think all 1 and 2 are right. देखिए, पैरोल एक सिस्टम है रिलीजिंग अ प्रिजनर विथ सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। पहले तो सस्पेंशन करना होगा, जो सज़ा मिला है उसको स्थगित किया जाएगा, उसके बाद उसको पैरोल मिलेगा। क्योंकि अगर मानते हैं पैरोल का मतलब है कि आपकी अवधि तो घट जाएगी ना, तो बाहर घूमेगा ना। सपोज 10 साल का सज़ा है और आप मतलब समझो 6 महीने के लिए आपको पैरोल मिल रहा है, तो 6 महीना पहले
वहाँ रोका जाएगा और उसके बाद फिर 6 महीना फिर बाद में आपको वही सज़ा बरकरार आगे बढ़ा दिया जाएगा। 10 साल 6 महीना का सज़ा होगा आपको। द रिलीज इज़ कंडीशनल, और ये कंडीशनल होता है, ऐसा नहीं है कि कंडीशनल कंडीशनल है। रिलीज इज कंडीशनल, यूजली सब्जेक्ट टू बिहेवियर, रिक्वायर पीरियडिक रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटी बाय द सेट पीरियड ऑफ टाइम। आपके बिहेवियर पर, आपके व्यवहार पर लगातार रिपोर्टिंग की जाएगी अथॉरिटीज़ के द्वारा। एक निश्चित समय अवधि के बाद वो जांच भी किया जाएगा। टेम्पररी रिलीज अंडर द प्रोविजंस फॉर पैरोल या फिर फरलो इज गिवन बाय द स्टेट। अगर सरकार ने, मतलब हो सकता है सरकार जो है उस कैदी के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा सहानुभूति दिखा दी और सरकार जो है वो सरकार के मतलब फेवर में था, इसलिए वगैरह वगैरह जो भी हो, तो सरकार ने उसको रिलीज कर दिया। लेकिन क्या कोई दूसरा व्यक्ति इसके खिलाफ जा सकता है? तो बट द डिसीजन कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट। लेकिन सरकार के इस, राज्य के इस एक्शन के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। देयर आर नो सेक्शन इन इंडियन पेनल कोड, कोई भी आईपीसी नहीं है विद डील द पैरोल, बिकॉज देयर इज नो यूनिफाइड लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट डील्स विद इट। कोई निश्चित नियम नहीं है। इंडिविजुअल स्टेट ऑफ देयर वन लॉ, अलग अलग राज्यों का अपना अपना मानवाधिकार है। एज ए रिजल्ट देयर इज नो सम देयर इज सम एम्बाइग्यूटी व्हेन इट कम्स टू द कंसर्न अबाउट द पैरोल। तो जब भी पैरोल की बात आएगी समझ जाइए अब तो राज्य बेटा अपना दिमाग लगाएगा, अपने तरीके से काम करेगा। क्योंकि गुरमीत राम रहीम, द हेड ऑफ द देरा सच्चा सौदा, was released from jail on parole। नारकोंडम एक आइलैंड है जो बहुत ही चर्चा में, नारकोंडम तो पता होगा कहाँ पर है। नारकोंडम आइलैंड एक वोल्कानो है क्या, एक सबमरीन है क्या, ये अर्थमोस्ट आइलैंड है क्या, ये सेंटलीज है नारकोंडम, ये ना इससे इंडिया ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है। यस, नारकोंडम। नारकोंडम इंडिया का जो सबसे ईस्ट मोस्ट आइलैंड है, ईस्ट मोस्ट आइलैंड, एक स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड इन नदर्न अंडमान निकोबार, अंडमान सी में है। आइलैंड पिक्स राइजेस 770 मीटर एबव द, ये सी है तो इतना ऊंचा है नारकोंडम, ठीक है, 770 मीटर ऊपर है सी लेवल से। एंड इट इज फ्रॉम एंटीडासाइड, इट इज अ पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड। द मेन बॉडी ऑफ दिस लाई अप्रोक्सीमेटली 74 किलोमीटर to the west. The island is a part of the Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Island. This island is small, covering an area of approximately 6.5 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है और क्लासिफाइड किया गया है जो डोरमेंट वोल्कानो बाय द जीएसआई। तो यहाँ पर एक डोरमेंट वोल्कानो भी है नारकोंडम में। आइलैंड वॉज रिसेंटली न्यूज। अगला क्वेश्चन है कि विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल बैंक यूनिट्स, डिजिटल बैंक यूनिट्स DBU, they are online portal which helps the people access various banking facilities. Digital banking units will help spread digital financial literacy and also the real time assessment। रियल टाइम असिस्टेंस मदद करेगा, ऑफर रियल टाइम असिस्टेंस डिजिटल बैंक यूनिट्स, विच आर द करेक्ट। चलिए इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो 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 डिजिटल बैंक यूनिट्स की जो बात कर रहे हैं, विल बी ब्रिक एंड मोर्टार outlets which will provide a variety of digital banking facilities to the people such as, जैसे खाता खोलना है, सेविंग अकाउंट, बैलेंस चेक करना है, प्रिंट पासबुक, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट, लोन फैसिलिटीज, लोन एप्लीकेशन, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर चेक इशू, अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टेटमेंट चेक करना है, पे टैक्स, पे बिल्स, मैक नॉमिनेशन, इट इज, उसमें डिजिटल बैंक यूनिट्स मदद करेगा। डिजिटल बैंक यूनिट will enable customer
to have a cost-effective, convenient access, enhanced digital experience of the banking products and services throughout the year. साल भर they will spread digital financial literacy. Special emphasis will be given to the customer education on cyber security, awarenesses and safeguards. Also, there shall be adequate digital mechanism to offer real-time assistance, reduce customer grievances arising from the business service provided by the DBUs directly or through the business facilitators correspondence. PM Modi dedicated 75 digital banking units across the district to the nation. 75 डिस्ट्रिक्ट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स. अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग. इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के बारे में सवाल है. द डिफेंस डायलॉग हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टू बी हेल्ड एवरी ईयर ऑन द साइडलाइंस ऑफ DFAXO over Researchers Foundation ORF is the knowledge partner of IADD. Which are the correct? Only and only D, क्योंकि इसमें दोनों के स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं. देखिए पहला जो है फर्स्ट ईवर, पहली बार इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव लखनऊ में हुआ, यूपी में, विद डेफेक्सो. ए जॉइंट डिक्लेरेशन, लखनऊ डिक्लेरेशन कहा गया उसको, was adopted at the end of the conclave. An outcome document, it continuance of the Lucknow Declaration in the consultation with the stockholders. India Africa Defense Expo जो है has been institutionalized to held once every 2 years on the sidelines of the de facto. IADD will explore the new areas of convergence for the mutual engagement, including the areas like the capacity building, training, cyber security, maritime security, counter terrorism. ये जो आप मनोहर पारिकर जो इंस्टीट्यूट है उसको डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इज द नॉलेज पार्टनर फॉर इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग. अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अबाउट द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. क्या ये एक संविधिक बॉडी है जो कि स्थापित की गई थी एयर एक्ट 1981 के तहत. A government official of the rank of the secretary or chief secretary will chair the commission. The commission will have the powers to overrule the directives issued by the state government in the region. Which are the correct? चलिए, आई थिंक ये आंसर प्राप्त कर चुके हैं, केवल 3 सही हैं. देखिए सबसे पहली बात, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन इसकी स्थापना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन में की गई है. एंड इसके लिए जो एक्ट था वो 2021 लाया गया. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल एडजॉइनिंग एरिया 2021 का एक्ट है. उसके तहत क्वाम का गठन किया गया है, CAQM का. तो कमीशन सेल बी ए चेयर बाय फुल टाइम चेयरपर्सन. इसका एक फुल टाइम चेयरपर्सन है जिसका स्पेशल नॉलेज है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर, और कम से कम नॉट लेस देन 15 ईयर्स, 15 साल से कम एक्सपीरियंस का नहीं होना चाहिए. हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस
नॉट लेस देन 25 ईयर्स, 25 साल का प्रशासनिक अनुभव, या फिर 15 साल का इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे होता है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। द कमीशन इज हैज अ गिवन overreaching power in achieving this mandate. It is a powerful body whose rulings will override anything contained in the law. दूसरे कानून में कुछ भी लिखा हो सबको ओवररूल कर देगा भाई। It will also have the powers to overrule the directive issued by the state government in this region. स्टेट गवर्नमेंट के इशू को भी ये ओवररूल कर सकता है। That may be वायलेशन ऑफ द पोल्यूशन रूल। अगर आपने पोल्यूशन को लेकर जरा भी चूँ चाँ किया तो ये चूँ चाँ आपका निकाल देगा स्टेट का। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर और एडजॉइनिंग एरिया CAQM has reiterated to the all the implementing agency of the central and the state government of NCR to strictly implement action under the stage 1 of the GRAP. अगला क्वेश्चन है FDI से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू द capital instrument by a person resident outside India in an unlisted Indian company, which are the correct. FDI in India can under both automatic as well as government route. AFDI holding which falls under a certain threshold can be reclassified as a FPI. कोई भी FDI जो कि एक निश्चित थ्रेशोल्ड पूरा करता हो, क्या उसको फिर से रिक्लासिफाइड HAFI किया जा सकता है? भी ज़्यादा करेक्ट। चलिए, इसके सभी स्टेटमेंट्स 1 और 2 सही हैं क्योंकि उसमें उल्टा दिया हुआ है। देखिए, FDI इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू द कैपिटल मार्केट, थ्रू द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय पर्सन और रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो बाहर रहता हो। ठीक है, बाहर से कोई अगर हमारे देश में निवेश करना चाहता है, इन ए अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, या तो वो अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में निवेश कर दे। दूसरा बात कि वो अगर 10% या फिर उससे ज़्यादा पोस्ट इशू और पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल ऑन ए फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस ऑन ए लिस्टेड इंडियन कंपनी, या फिर किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी में 10 या 10 से अधिक परसेंट अगर उसके पास उसका इक्विटी कैपिटल है, यानी शेयर उसके पास है, उसका 10% से ज़्यादा मालिकाना हक है, तो भी ऐसा FDI ही होगा। अब चूँकि FDI जो है वो गवर्नमेंट रूट से भी आ सकता है, ऑटोमेटिक रूट से भी आ सकता है। तो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउडेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार से बिना पूछे, RBI से बिना पूछे आप आराम से ऑटोमेटिक रूट के तहत इसमें प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि कुछ सेक्टर्स को छोड़ दिया गया है इसमें, इन द ऑल एक्टिविटीज सेक्टर्स, जैसे कि फेमा इसके लिए बनाया गया है। तो गवर्नमेंट रूट जो है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इज नॉट कवर्ड, ठीक है, जो अंडर द ऑटोमेटिक रूट में जो नहीं है, उसके बाद जो बचता है उसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए सरकार का। और ऐसे गुनी चुनी ही मतलब क्षेत्र है। रही बात किसी भी FPI इन्वेस्टमेंट को, फॉर एन FPI इन्वेस्टमेंट वंस द इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज FDI, अगर एक बार कोई FDI बन गया, ठीक है, once the FPI investments, the investment is classified as a FDI basis on holding. If the FDI holding comes back to less than 10% or greater than 10%, it will classified as a FDI. फिर से उसको FDI कर दिया जाएगा। once an FDI always an FDI। वाह, एक बार FDI हो जाइए वो हमेशा के लिए FDI हो जाएगा, चाहे उसका इन्वेस्टमेंट 10% से कम भी क्यों ना हो जाए। एक बार FDI हमेशा के लिए FDI फिक्स्ड हो जाता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता। इंडिया हैज द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट $475 बिलियन अट्रैक्ट कर सकता है FDI इन द नेक्स्ट 5 years, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय
EY at the Conference of Indian Industry. अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंडियन बाइसन जिसको गौर भी कहते हैं, ये कहाँ मिलता है? इंडियन गौर बताइए। इंडियन गौर कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट में, ट्रांस हिमालयन रीजन में, इंडो बर्मा क्षेत्र में। ये भैंसा जो है, इंडियन भैंसा, ये केवल और केवल वेस्टर्न घाट में मिलता है। केवल नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडियन गौर इज प्रोटेक्टेड स्पीसीज इंक्लूडेड द शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 91 में एक में रखा गया है। वल्नरेबल कैटेगरी में है भैया IUCN की रेड लिस्ट में। और पॉपुलेशन जो है लगभग लगभग वो 12,000 से 22,000 के आसपास है। 1990 के आसपास था। वेस्टर्न घाट्स and their outflanking hills in the southern India constitute one of the most extensive extended stronghold gore in the Wayanad, Nagarhole, Madhumalai, Bandipur complex. Sri Lanka requested India to translocate 6 Indian bison to reintroduce them in the island. अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपके संबंध कॉम्प्रेस्ड बायोगैस CBG. It is produced naturally through the process of aerobic decomposition from the waste biomass sources. It is exactly similar to the commercial available natural gas in its composition, energy potential, municipal solid waste, sugarcane press mud, distillery spent boss, cattle dung can be used as a source to produce CBG. Which are the correct? चलिए एक और दो या दो और तीन, इसमें दो और तीन सही जवाब है क्योंकि बायोगैस इज प्रोड्यूस नेचुरली, ठीक है, लेकिन ये एनएरोबिक प्रोसेस से होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। फ्रॉम वेस्ट या फिर बायोमास लाइक एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कैटल डंग, शुगर कैन, प्रेस मड, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, आफ्टर पार्टिस प्यूरिफिकेशन, it is compressed and called CBG which is high methane content. मैथेन तो होगा ही बायोगैस में। Compressed biogas is exactly similar to the commercial available natural gas in composition, energy सब बराबर है, with a similar calorific value, other properties similar to CNG. Compressed biogas can be used as an alternative, used as a renewable automotive fuel. Compressed biogas can be produced from various biomass, water or waste resources including agriculture, municipal solid waste, sugarcane press mud, distillery spent waste, cattle dung, sewage treatment plants waste, etc. The other waste streams that is rotten potatoes from cold storage, rotten vegetables, dairy plants, chicken, poultry, litter, food waste, horticulture waste, forestry residue, treated organic waste from industrial effluent treatment plants can be used to generate biogas. एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट जो है वो इनॉग्रेटेड होने वाला है संगूर में, हो चुका है संगूर में, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड। सोच लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। वाइजर प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। वाइजर द प्रोग्राम इज ओपन टू द ऑल एरिया ऑफ स्टेम and has the 3-year tenure period. It allows the researchers to work on the international projects while continuing to stay in India. 3-year STEM. वाइजर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। द प्रोग्राम है 3-year टेन्योर, 3 साल का इसमें समय अवधि है जब till completion of the project and it is open to all the areas of STEM.
It allows the researchers to work on international projects while continuing to stay in India. It will cover one visit per year for a short stay up to 1 month. The first 11 awardee of women involvement in science and engineering research wiser program were felicitated. With the reference to the International Criminal Police Organization, Interpol, International Criminal Police Organization, Interpol, consider the following. जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल है, इट इज ए सुपर नेशनल लॉ enforcement agency, supranational information agency, but does not have the agent with arresting the power. लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है इसको. Interpol issued 4 types of color-coded notice, with the raid being accorded the highest priority. ज़्यादा खट. चलिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलती हो गए. देखिए, contrary to the common idea, due to the frequent portrayals in popular media, Interpol is not a supranational law enforcement agency. इंटरपोल कोई सुपर नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है. हैज़ नो एजेंट विद अरेस्टिंग पावर्स. कोई इसके पास अरेस्टिंग पावर होता ही नहीं है, बल्कि इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फंक्शन एज ए नेटवर्क ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज. एक तरह से नेटवर्क के रूप में काम करता है. ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट को किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए, एक दूसरे के साथ कैसे बात मतलब संबंध बनाया जाए. द ऑर्गेनाइजेशन दस फंक्शन एज ए administrating liaising among the different law agencies the members countries, providing communication database assistance mostly through the central headquarter in Lyon. इसका लियोन में हेडक्वार्टर है. There are 8 types of notice. 8 प्रकार का नोटिस निकलता है. 7 of which are colored coded. 7 को तो रंगे हैं. रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज एंड पर्पल. इसको तो इंद्रधनुष बोल सकते हैं. बेस्ट नन एज ए नोटिस. रेड नोटिस विच इज द क्लोजेस्ट इंस्ट्रूमेंट एज एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इन यूज टुडे. राइट स्पेशल नोटिस इज इशूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. 8वां जो है स्पेशल नोटिस जारी किया जा चुका है सुरक्षा परिषद के कहने पर. प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड 19th इंटरनेशनल इंटरपोल जनरल असेंबली रिसेंटली. Which of the following ancient towns known as the oldest man-made dockyard? Trade for beads, gems, valuable ornaments in Indus Valley civilization. सबसे पुराना डॉकयार्ड तो लोथल होना चाहिए. Lothal was one of the southernmost sites in the ancient Indus Valley civilization, जो कि बहाल क्षेत्र में है, गुजरात में. Lothal was a vital and thriving trade center in the ancient time, with its trade of beads, gems, valuable ornaments, which reaching far corners of the West Asia to Africa. Lothal was one of the prominent cities of the Harappa civilization and also known as the discovery of oldest man-made dockyard. National Maritime Heritage Complex at Lothal was in use. Consider the following statement. A judgment delivered by a larger bench will prevail over the smaller bench, irrespective of the number of the judges constituting the majority of the larger bench. A judgment delivered by a larger bench will prevail over the smaller bench, irrespective of the number of the judges constituting the majority in the larger bench. A bench of equal strength cannot overrule or reconsider a decision of a coordinate bench.
India follow the doctrine of precedence as found in the Constitution of USA. Doctrine of precedence. You know about that? What is the doctrine of precedence? मतलब संविधान ये मान के चलती है, सुप्रीम कोर्ट ये मान के चलती है कि जो चीज़ बनाया गया वो संवैधानिक ही है। चलिए, इसका सही जवाब केवल और केवल एक और दो। इसमें क्या पूछा देख लीजिए, करेक्ट पूछा है, एक और दो करेक्ट है। A constitution bench of the Supreme Court has unanimously held that the judgment delivered by a larger bench will prevail over the decision of the smaller bench, irrespective of the number of judges constituting the majority in the larger bench. It is settled position that a bench of the equal strength cannot overrule or reconsider a decision of the coordinate bench. It can be at best doubt of the correctness of it. Overrule तो नहीं कर सकता है. Doctrine of precedence is usually avoided in US. Doctrine of precedence जो है वो USA में जो है ना अवॉइडेड किया जाता है. And in South Africa, owing to the fact that any reconsideration of the precedence is matter deliberated by the entire sitting of the strength of the court opposed to the reason. While both UK and Australia follow the system similar to that of India, the entire act reconsidered a precedent is viewed as a delicate and a grave judicial responsibility in these countries. Consider the following statement with respect to National Credit Framework (NCF). नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में पूछा जा रहा है. It will enable the integration of academic, vocational and skill education. It supports educational acceleration for the students with the gifted learning abilities and recognition of prior learning. It encompasses National Higher Education Qualification Framework, National Skill Qualification Framework, National School Education Qualification Framework. It encompasses. Which are the correct about NR? चलिए, डी सबके सब सही है भाई, क्योंकि जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया गया है वो इनेबल करेगा द इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक vocational domains to ensure flexibility, the mobility between the two. NCRF would be the game changer by opening a numerous options for further progression of students and the intermingling of school and higher education and with the vocational education, experimental learning. Thus, mainstreaming skilling and vocational education will be in center. It also supports the educational acceleration for the students with gifted learning abilities and recognition the prior learning for the workforce that has acquired knowledge and skill uniformly through the traditionally family inheritance work experiences and other methods. NCRF will seamlessly integrate the credit earned through the school education, higher education, vocational education, skill education, encompassing the National Higher Education Qualification Framework, National Skill Qualification Framework, National Skill Qualification Framework, National School Education Qualification Framework. Positive indigestion list, term often seen news. What is that? Positive indigestion. It's B. Defense equipment. Positive indigenation list essentially means that armed forces, army, navy, air force will only procure the listed items from domestic manufacturer. It's a positive indigenation.
The manufacturer could be private sector players or defense public sector undertaking. The concept was rolled out in the Defense Acquisition Procedure 2020. Fourth positive indigenation list of 101 items was announced by the Prime Minister Narendra Modi during the opening ceremony of DefExpo 2022 in Gandhinagar, Gujarat on October 19, 2022. With the reference to the Special Campaign for Disposal of the Pending Matters (SCDPM 2.0), Special Campaign for Disposal of the Pending Matters, consider the following. The campaign will fasten up the pendency of the cases which are older than 2 years at the district court level. District court level. Ministry of Law and Justice is the nodal department for the initiative. Which are the correct? Which are the correct? I think so nothing is correct. You know about that special campaign 2.0 will focus on outstation officers in addition to the ministries, departments, and their test subordinate officers. Campaign is sequel of the first Swachhata campaign in a special campaign. Special campaign is like a sequel of the first Swachhata campaign on a special campaign for disposal pending matters organized from 2nd October 2021 to 31st October 2021. The special campaign 2021 was implemented and monitored through the real-time dashboard. Technology was leveraged to bring the whole ministry's department on a single interactive platform for experiencing, share, reading, and learning from the best practices of each other. The Department of Administrative Reforms and the Public Grievances (DARPG) will be the nodal department and oversee implementation of the special campaign. DARPG has issued detailed guidelines for the implementation and monitoring of the special campaign. Best practices were adopted under the special campaign for disposal on pending matters. Consider the following statement with respect to soil carbon stability. Soil carbon stability. Removal of grazing by herbivores from the ecosystem can increase the fluctuation in the level of the soil carbon. Soil contains more carbon than all plants in the atmosphere combined. Nitrogen always stabilizes the carbon pool in the terrestrial ecosystem. Which are the correct? चलिए सर दूसरा स्टेटमेंट आप छाट दीजिए एक और दो सही है छाटना नहीं है आपको देखिए एक्सपेरिमेंटल रिमूवल ऑफ ग्रेजिंग एक्सपेरिमेंटल removal of grazing by herbivores from such ecosystem was found to be increase the fluctuation in the level of the soil carbon, which can have a negative consequences for the global carbon cycle. When plants and animals die, dead organic matter remains in the soil for a long duration before microbes break it down and release carbon into the atmosphere as a carbon dioxide. Soil contains more carbon than the all plants and the atmosphere combined. तो सोइल में जितनी कार्बन है ना पूरा का पूरा जितना प्लांट है पूरा कार्बन जो वातावरण में है सबको मिला भी दीजिए ना तो सॉइल कंटेंट में ज़्यादा है A key factor underlying the carbon level fluctuation was nitrogen. Depending on the soil condition, nitrogen can either stabilize or destabilize the carbon pool. या तो stabilize भी कर सकता है और destabilize भी कर सकता है carbon pool को. Grazing by herbivores, however, changes their interaction in ways that tip the balance in the favor of the former. A study carried out by the researchers at the Center for the Ecological Sciences and Devacha Center for the Climate Change (ISC) has revealed that grazing animals hold a key to a long-term soil carbon stability.
Consider the following statement with respect to Reserve Bank Innovation Hub. Reserve Bank Innovation Hub. Reserve Bank Innovation Hub will provide the platform to the anchor a shared vision among the all financial ecosystem stakeholders. It is a joint initiative between Ministry of Finance and Reserve Bank of India. Which are the correct? Only and only A is the right answer. The Reserve Bank Innovative Hub will provide a platform, the anchor, a shared vision among the all financial ecosystem stakeholders and aid them in crafting forward-looking innovation strategy while addressing the most pressing issue in the financial sector. The organization serves as a pool or focal point to the position India in the global innovation hub for the network of the financial services providers, fintech, fintech innovation hubs, policymakers, technologists, academia, and the investor community. RBI, Reserve Bank Innovation Hub, is the wholly owned subsidiary of RBI. It's a wholly owned subsidiary of RBI. India Post Payment Bank and RBIH collaborated for innovation in financial products and services. Consider the following statement with respect to United Nations Security Council resolution. The term resolution appears in the Article 15 of the United Nations Charter. Draft resolution on procedural matters is adopted if it is not voted by any of the five permanent members. If the Security Council cannot reach consensus, they may choose to produce a non-binding presidential statement. Which are the correct? I think only and only three is the right answer. The term resolution does not appear in the text of the United Nations. ये जो term resolution है ना, वो there is a no appeared in a text of the United Nations Charter. Charter में नहीं है. It contains numerous formula such as decision, recommendation, which imply the adoption of the resolution which do not specify the method to be used. Under the UN Charter specific Article number 27, the draft resolution on a non-procedural matters is adopted if 9 or more of the 15 council members vote for the resolution and if it is not voted by any of the 5 permanent members, the draft resolution on the procedural matters can be adopted on the basis of the affirmative vote by any 9 of the council members. If the Security Council cannot reach consensus or passing vote on a resolution, they may choose to produce a non-binding presidential statement instead of a resolution. These are adopted by consensus. They are meant to apply politically pressure, a warning that council is paying attention and further action may follow. China blocked two proposals by India to designate Pakistan-based terrorist. Consider the following statement with respect to Swadesh Darshan 2. Swadesh Darshan 2. The scheme promotes theme-based tourist circuits, moving away from the destination tourism. The scheme promotes theme-based tourist circuits, moving away from the destination tourism. Swadesh Darshan scheme is entirely centrally funded. Which are the correct? I think it's only B is the right answer. You know about that this scheme is promoted as a part of the India's new domestic tourism policy, which moves away from the time-based tourist circuit and focuses on
revamping of the destination tourism, not destination par, but destination tourism. Destination tourism. Under the scheme, the Ministry of Tourism provides financial assistance to the state government, QT, and central agency for the development of the tourism and infrastructure in the country. So this Darshan scheme is 100% centrally funded. Union government has launched Swadesh Darshan 2 with the chosen destination from the 15 state. Rustam 2 is seen in news. What is this? It's advanced, it's an unmanned air vehicle. Rustam 2 is also known as Tapas VH, Tactical Airborne Platform for aerial surveillance beyond horizon. Rustam 2.0 is also known as Tapas BH. It can carry a variety of payloads to the maximum 350 kg उठा सकता है ये. Rustam 2 is a platform designated to perform intelligence, surveillance, reconnaissance missions for Indian Armed Forces. These missions requirements are to provide continuous wide area coverage and to be able to identify the small targets. Rustam 2 is comparable in the same class such as IAIS Huron